very good morning to all our viewers. You've tuned into the morning show on CNN News 18. I'm Koina Sharma and I'll take you through all the latest news and updates from in and around the world. But first up, we are discussing West Bengal. Well, the Panchayat elections in West Bengal concluded yesterday amid massive violence. Multiple incidents of violence were reported in the Bengal's Murshidabad, Coochbihar, Bhangar, killing over 10 people and taking the overall death toll to 25. Now, the BJP has demanded the imposition of president's rule in the state, while the Congress moved the Calcutta High Court, demanding to declare the elections null and void. Now, BJP Chief JP Nadda spoke to leader of opposition Suvendhu Adhikary and State BJP Chief Sukanta Majumdar and took stock of the situation, while the Ministry of Home Affairs has sought a detailed report from Sukanta Majumdar about the poll violence. Now, the TMC, on the other hand, has alleged that violence was instigated by the opposition parties and many TMC workers have been killed. Well, CNN News 18's Payal Mehta spoke exclusively to Union Minister of State Nishit Pramanik over the poll violence in West Bengal. Let's listen in. निशित जी, आज सुबह से जो हालात है बंगाल में, हर जगह पर वायलेंस की खबर आ रही है। आपके खुद के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कई लोगों की मौत है, कई लोग घायल हो चुके हैं। क्या हाल हो रहा है बंगाल में, क्या चल रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं पायल जी आपको यह कहना चाहूंगा कि बंगाल का जो हालत है और 3 टायर पंचायत इलेक्शन को लेकर जो स्थिति पूरा बंगाल में है, ये मैं कहूंगा कि यहाँ पर गणतंत्र की हत्या हो रहा है। और जो यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस का एजेंट का रूप में काम कर रहा है। और मुझे लगता है किसी भी इलेक्शन कमीशन को निरपेक्षता के साथ काम करना चाहिए। जब चुनाव की घोषणा हुई उस समय में ही हम सभी लोगों ने मिलकर, यानी विपक्ष की जो पार्टी है, भाजपा, कांग्रेस और सभी पार्टी मिलकर ये कहा कि किसी भी चुनाव घोषणा करने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के बाद, सभी लोगों का राय लेने के बाद कितनी दफा में यानी कितनी फेज में इलेक्शन होगा उसका सिद्धांत लेना चाहिए। लेकिन ये जो बंगाल की जो इलेक्शन कमीशन है, ये हड़बड़ी में इतनी बड़ी गलती कर दी कि जो बंगाल का जो शांति है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है विघ्नित हो रहा है और डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। इलेक्शन यानी चुनाव के मतलब होता है गणतंत्र की सबसे बड़ा जो है महोत्सव, और बंगाल में इस बार की 3 टायर चुनाव जो आज हुआ, इसमें मृत्यु का मिছিল हम सभी लोगों को दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कहीं जाकर जो इलेक्शन कमीशन है उनको पहले सोचकर पूरा इसका ऊपर विचार करके ही डिसीजन लेना चाहिए था। इतना हड़बड़ी करने की वजह से ही ऐसी हालत पूरा वेस्ट बंगाल में है, और हर एक जो मृत्यु हो रहा है उसकी पूरा जो दाय है स्टेट इलेक्शन कमीशन को ही लेना पड़ेगा। आप लगातार बने हुए बंगाल में, क्योंकि आप केंद्र मंत्री भी रहे हैं, क्या आपसे किसी तरह की कोई रिपोर्ट मांगी गई है केंद्र से? क्योंकि ये भी सुनने में आया था कि आपसे बात की है गृह मंत्री ने, पार्टी प्रेसिडेंट ने भी बात की है, शुभेंदु अधिकारी से भी बात की है, सुकांतु मजूमदार से भी बात की है। केंद्र का क्या विचार चल रहा है इस समय और क्या किस तरह की रिपोर्ट आपसे मांगी गई है? देखिए, जो बंगाल का जो स्थिति है और बंगाल का जनता का जो यहाँ पर जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है, गणतांत्रिक अधिकार को छीना जा रहा है। बंगाल, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बंगाल, कोई चुनाव होगी तो लाश गिरना जरूरी है क्या? और ममता जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि पहले बिहार सहित बाकी प्रदेशों में भी बहुत लाशें गिरती थी, अब तो चुनाव आयोग की सख्ती के कारण वो काफी कम हो गया। आपके यहाँ भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग की सख्ती के कारण हिंसा थोड़ी कम होती है, लेकिन जब आपकी सरकार ग्राम पंचायत का चुनाव करवा रही है तो क्या हो रहा है? পরিকল্পিতভাবে সিপিএম কংগ্রেস
বিজেপি এবং আইএসএফ পার্টিকুলার কয়েকটা পকেটে সন্ত্রাস করেছে, টার্গেট করে তৃণমূলের কর্মীদের মেরেছে, প্রাণহানি ঘটেছে, রক্তপাত হয়েছে, গুরুতর জখম রয়েছেন কয়েকজন, হিংসায় প্ররোচনা দেয়া হয়েছে এবং এই গোটা উস্কানির পেছনে রাজ্যপালও রয়েছে। কারণ তারা দেখাতে চাইছেন যে বাংলায় নেগেটিভ ঘটনা ঘটছে আর সেটা দিয়ে বাংলাকে কলুষিত করা এবং সেটা দিয়ে রাজনীতি করা। The Panchayat polls are underway amid all the violence, arson and the looting of the ballot box. How is the Bharatiya Janata Party or the central government reacting to it? I think the law and order situation is really bad. If you have to say, it has really collapsed. But time and again we have seen the moment the election process starts in the state of Bengal, the bomb culture comes back. The killings is happening on daily basis. More than 12 people have already lost their lives. Thousands are hurt, injured and hospitalized. Is that the right way in a democracy to be in power? There's a lot of question mark being raised on the Mamtaji's government and her governance model, where the killings have become a norm to win elections. Bengal bomb culture is making the news and headlines. And why they oppose EVM and are in favor of the ballot boxes? Because they can easily rig the election process, take away the ballot boxes and run away and do whatever they want. But where are those forces who sitting in their newsrooms always used to raise questions, and those award wapsi people who used to say that we are going to give our awards back to the government? Don't they think that the democracy, there's a killing of the democracy, isn't it? So, but who according to you is responsible for the same? Because the counter allegation is being made by the TMC party. They are saying that your workers, your party people are responsible for all these killings. The state government, the state machinery, who is responsible to hold the free and fair elections. It doesn't happen anywhere in the country. We used to see such ugly scenes in the state of Bihar couple of decades back, but the Bengal and the Bengal bomb cultures and the killings are making the headlines now. So the allegations are also being made against the central security forces. They are close to 60,000 polling booths and 59,000 is the number for the security personnel. Do you think that the adequate number of the security personnel from the central side is present in the state? As I said earlier, it is the responsibility of the state government to hold the free and fair elections. But if the state machinery is misused to win elections and the top leadership is involved and gone deaf and dumb and not even speaking on any issue, especially on the violence. And we have seen that after the Vidhan Sabha elections, we have seen that again, the kind of bomb culture in Bengal during the Panchayat elections as well. Mamata Banerjee should come clean on this. And their law and order situation has actually collapsed in the state of Bengal. And the Bengal bomb culture is making the news. So last question, since this is not the first time when the violence is taking place at the time of the elections, is there any step or action which will be taken by the leaders of the Bharatiya Janata Party or central government for that matter? We have time and again complained, but if you look at the incidents, the High Court passed the judgment, Supreme Court passed the judgment, paramilitary forces central armed forces were deployed. The Bengal governor himself talked about the violence in the state of Bengal. Even the Bengali people have been saying it, shouting on the social media as well. But here is the Mamata government, where the Chief Minister herself is sheltering those who are involved in the violence, in the rigging process, and all those who are involved in the killing of so many people just to win elections. What could be a big shame for any Chief Minister or any state? She must come clean on that. I have been in the field right from the morning. I expected very peaceful elections to take place. People requested me to stop my motorcade on the way. There are lots of things to tell. They told me about murders happening around them.
They told me about goons not allowing them to go to the polling booth. They told me about presiding officers not cooperating with them, not listening to them. Rani, there are reports on adjoining areas where there has been violence, intimidation tactics. Do you think the whole point of deploying central forces has been wasted? Has that really worked? This government and the frontal organization of the ruling TMC, State Election Commission, and the chairman of the State Election Commission, Mr. Rajiv Sinha, a controversial bureaucrat of our state. Since 9th June, they are not interested to deploy central paramilitary forces regarding this Panchayat election held today. Day before yesterday, they issued a letter to Suvendhu Adhikary to restrict my movement. Yes. On the date of poll, Suvendhu Adhikary may cast his vote in both polling station and not to go anywhere. Why do you think they did that? Why do you think they did that? They are afraid Of you? because BJP and the leader of opposition nominated by the central leadership is not sitting opposition. Mamata Banerjee is facing serious opposition from our side. You know, last Panchayat election 2018, 34% seat uncontested by the TMC. And huge incident happened on the date of poll and date of counting also. After that, 2019, BJP got 18 seats. Today, what is happening in Bengal, 2024, people will react when they will go in front of the EVM. बंगाल में सारा व्यवस्था असंवैधानिक कामों में पूरा लग चुकी है। ना वहाँ की सरकार राज्यपाल के आदेश को कोई सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट के आदेश को सम्मान करते हैं, सेंट्रल एजेंसीज रहनी चाहिए, हाईकोर्ट की ऑर्डर रहा। ये सारे प्रिकॉशंस के बावजूद जब जमीनी स्तर पर जब स्थानीय पुलिस और प्रशासन खुद ही पार्शियल हो जाए और बायस्ड हो जाए और राजनीतिक दृष्टि से काम करे, ये तो संवैधानिक व्यवस्था इसको नहीं कहा जाता है। और विशेष करके डेमोक्रेसी में हिंसा की कोई स्थान नहीं है, लेकिन वहाँ की स्थानीय सरकार जनाधार खो चुकी है, उसकी भय से वो हिंसक प्रवृत्ति अपना रहे हैं। The ruling party, in cahoots with the police administrations, somewhere in direct participation of the police administration, leave alone the genuflecting election commission of Bengal, has unleashed a reign of terror in an unprecedented way. Well, that was West Bengal's violence fallout on the day of polling. Moving our focus now to Prime Minister's jibe on Congress. Prime Minister Narendra Modi launched a scathing attack on the Ashok Gehlot-led Congress government in Rajasthan. Now, speaking at a public meeting in Bikaner, PM Modi lashed out at the grand old party and called it a loot ki dukaan and jhooth ka bazaar. Sharpening his attacks, PM further said that Congress is sure of its defeat and its MLAs have already started vacating the bungalows. Slamming the Rajasthan government, Modi said that Ashok Gehlot's government has carved a new identity for itself when it comes to corruption, crime and appeasement politics. Remember, it's an election year for Rajasthan and the state will go for polls in the month of December this year. Let's take a look at some of the reactions from PM Modi.
हम दिल्ली से योजनाएं यहां राजस्थान में भेजते हैं, लेकिन यहां जयपुर में कांग्रेस का पंजा उस पर झपटा मार देता है। राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार के जो अल्फाज हैं मुंह से अच्छे नहीं लगते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 27 जून को मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा था कि ये जो विपक्षी दलों का जमावड़ा है वहां पे भ्रष्टाचार की गारंटी है और मेरी गारंटी है भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की। लेकिन प्रधानमंत्री जी, जिस एनसीपी पे आपने 71,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उसमें सजायाफ्ता, विचाराधीन और आरोपित व्यक्तियों को महाराष्ट्र के अंदर आपने उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद से नवाजा है। Well, from that political showdown in Rajasthan, we are moving our focus to some weather updates that are required. Now, as the monsoon begins in North India, the IMD has issued warnings for the future. Now, the Indian Meteorological Department has predicted that heavy rainfall will take place in states like Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Punjab, Chandigarh and the national capital. Now, for the hill states of Himachal Pradesh, the Meteorological Department has issued a red alert stating that extremely heavy rain showers are expected today. Landslides and flash floods have blocked several roads in Shimla, Sirmaur, Lahaul and Spiti, Chamba and Solan districts. This is basically the Janpat area which is inundated in water after the heavy spell of rains. And in fact, if we go by the facts, there are many areas in the national capital which are being waterlogged after this heavy spell of rainfall. And in fact, these are the Tibetan market shops over here at the Janpat area. And in fact, you can see how the water has actually started receding inside the shops of these very people who are doing their business from this Tibetan market. And in fact, I have one gentleman with me whose shop is almost like the floor, everything is submerged into the water. First of all, I'll show you how this very shops look like. In fact, you can see, in fact, how much water has already receded inside this very shop. And in fact, business of this gentleman has also been affected. The main thing here to understand is that just after few hours of heavy rain, this is the condition of the national capital, and in particular from the prime the area which is considered as the prime location of the national capital, the central Delhi, the Janpat area, the Connaught Place area, and in fact if you go to the India Gate area as well, everywhere the situation is somewhat similar, and in fact at different point in times the situation continued to change. I'm coming to you from Firozshah Road, and in fact, first of all, directly let's go to the visuals. This is the situation over here, and in fact there is abundant, like the water has been waterlogged, almost my heels are knee deep in the water. And in fact you can see this is the prime location here in the national capital. This is what the central Delhi area looks like after just some hours of rain. And in fact this is the situation which we are bringing you from the ground over here. The traffic snarls are beginning to, and in fact the congestion of traffic is starting yet again over here. And in fact there was a breather in fact for some time here in the national capital when the rain stopped for actually couple of hours or there, and after that the rain continued yet again. And you can see the water is very much, in fact the water is inundated, and in fact this is the current situation. And in fact this is the level of civic maintenance which we are viewing at this very road, because this is the central Delhi area. And in fact if the condition of this road is something like this, then it's a worrisome situation, because it is just one of the days when Delhi is witnessing such heavy rain. अभी प्रेजेंटली इंडिया में, पूरे इंडिया में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है
और पंजाब और हरियाणा में भी समय से पहले ही मानसून की एंट्री हो चुकी है और मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। मानसून तो आपको यूजुअली यहाँ पर एंट्री डेट होता है 5 जुलाई तक पूरे पंजाब और हरियाणा कवर करने के लिए, लेकिन इस बार 2 जुलाई तक ही पूरे इंडिया को कवर कर चुका है। तो अभी मानसून तो एक्टिव है ही साथ अभी प्रेजेंटली एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव हो गया है, जिसके चलते हमको कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है बारिश का। अभी जो पंजाब और हरियाणा की जो सिचुएशंस है, हमने उसके बारे में आज एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है और आज और कल वेदर काफ़ी एक्टिव रहने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट को ये फोरकास्ट हमने भेज दिया, उनको हमने अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है और इससे प्रदेश में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है और इसमें फ्लैश फ्लड, मडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स और पेड़ टूटने, इसमें इलेक्ट्रिसिटी और पानी की उसमें भी व्यवधान आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। ये रेड अलर्ट 8 और 9 तारीख के लिए किया गया। Well, very heavy rainfall is expected to happen in the northern regions of India. Now, moving our focus to the western part of India, where the political crisis continues to intensify. Now, days after the crisis broke out in the Nationalist Congress Party, Party Supremo Sharad Pawar hit out at his nephew Ajit Pawar, saying that he only wants to serve people and will continue working, when the latter suggested that he should retire from active politics. Now, Uncle Pawar also said that he is neither tired nor retired, alluding to former PM Atal Bihari Vajpayee's words. Now, after NCP's internal crisis and Ajit Pawar's rebellion, Sena Chief and former Maharashtra CM Uddhav Thackeray today will be on a 2-day visit to the districts of Nagpur, Amravati, Yatmal and Washim. Well, CNN News 18's Siddhant Mishra spoke exclusively with Tom Overton, the Australian diplomat who speaks Hindi fluently and has become a social media sensation in India. The discussion revolved around the importance of language in resolving bilateral issues and other trade-related matters. Let's listen in. सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, and for our Hindi viewers also, कि कब आपको ये ख्याल आया कि मुझे हिंदी सीखनी है? And is there any proposal which was made by your government to you that since you are going to India, so you should have some understanding of India? And in fact, I have also been told that your government has directed you on this path. अगर आप उस बारे में थोड़ा बताना चाहें। हाँ बिल्कुल, तो मैं पहले भारत आना चाहता था, तो इसलिए लगभग 18 महीने पहले मैंने अप्लाई किया भारत आने के लिए और 1 साल पहले लगभग मुझे बताया गया कि हाँ मैं भारत आऊँगा, तो इसीलिए और इसी वक्त मैंने अपनी हिंदी की पढ़ाई शुरू की थी। अच्छा, हाँ, तो ये हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि लगभग 1 साल से मैं हिंदी सीख रहा हूँ। जो भी हिंदी बोल पाते हैं वो अपने 1 साल में सीख लिया? हाँ जी। अच्छा, और आपको वहाँ हिंदी कौन सिखाता था? कैसे आपने सीखी? मतलब आपके टीचर्स थे या किसी इंडियन ने आपको सिखाया या किसी ऑस्ट्रेलियन ने सिखाया? हाँ, तो मेरे 2 टीचर्स थे, एक जो और दोनों काफ़ी लंबे समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लेकिन ओरिजिनली भारत से हैं। तो एक ओरिजिनली दिल्ली से है और एक और बिहार से है। हाँ, लेकिन एक दिल्ली से एक बिहार से, उनके नाम क्या हैं, आप लेना चाहेंगे? तो दिल्ली से वाला अलका जी का नाम है और बिहार से वाला शैलेश। तो इन दोनों, शैलेश जी और अलका जी ने आपको हिंदी सिखाई? जी। तो आज उनको आप याद करेंगे? गुरुओं को याद करना इंडिया में प्रथा है। हाँ बिल्कुल। उनको प्रणाम करना इंडिया में प्रणाम जी। इस तरह के थैंकफुल, यू आर ग्रेटफुल टू। बिल्कुल। अच्छा, ऑल्सो हाउ इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इज for a diplomat, or maybe let me frame it this way, that what degree of role language plays when you sit down for a bilateral talk or when it comes to soft diplomacy, how important language plays a role? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हम ऑस्ट्रेलियन उच्चायोग में है और यहाँ पे मेरा काम का फोकस जो है वो आर्थिक और व्यापारिक नीति है, मतलब इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसी। तो बिल्कुल, अगर हम एक ही भाषा जानते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें और हमारे के बीच व्यापार और आसानी से व्यापार कर सकते हैं ना। तो हाँ,
तो जैसे कि पहले आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार अपने अधिकारियों को जो अधिकारी विदेश में काम करते हैं उनको कुछ भाषा की पढ़ाई देता है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप स्थानीय भाषा सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप स्थानीय संस्कृति को भी कुछ सम्मान, कुछ रिस्पेक्ट दिखाते हैं. Well, it's time to slip into a short break. Stay tuned. We'll be right back. Bomb making has flourished, so Panchayat has become a source of revenue generation for the people in the village, and the money goes up to the top. And because of that money, people who are staying together, celebrating together, they are killing each other. I mean, this is so sad. And in Keshpur, it's openly seen there are rigging happening, and what is the central forces are not properly deployed. The IG of BSF has questioned the State Election Commission that information of sensitive booths were not given. They are killing their own people. There are intra-party fight. The independents who are erstwhile independent people who were TMC candidates before, and now they are standing as independent so because they didn't get ticket. Let me ask Professor Dinesh Varshini. No, let me ask Professor Dinesh Varshini. One second, you cannot accuse. One second, ma'am. I'm coming back to you. Professor Dinesh Varshini, you cannot accuse just the TMC or the BJP of violence, because political violence in Bengal is as old as perhaps the state itself. For the last 30, 40 years, and certainly since the left was ruling, the spectre of political violence has always been the case in election time in Bengal. So why are you blaming the TMC and the BJP? This has been the history of the state. Look, it is better for the BJP, TMC to not to pass their failure of bucks on the left. Left have never allowed this type of violence. Left have never allowed this type of communal violence, but Suvendhu Adhikary has said that Hindus are not allowed to vote. Left has never allowed to not to allow the candidates or independent candidate to file the nomination. Please see the real motto. Hello and welcome back. You're watching CNN News 18. Well, let me bring to you some positive news. In an endeavor to contribute to a sustainable future and alternative energy resources, Mufera Majid, a 20-year-old young student from North Kashmir's Sopore, has successfully developed a prototype of a boat that operates both on solar and steam power. Now, Mufera has also been hailed by the JNK LG Manoj Sinha for his initiative. Mufera is a physics enthusiast who wants to develop gadgets which run on solar for a cleaner and better environment. She's now seeking government support for her further projects. Let's take a look. पिछले साल मेरे दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक हुआ. मेरे घर पे एक लाइट थी, एक टॉर्च थी जो सोलर पे चार्ज होती थी. लेटर ऑन दिन में चार्ज करके शाम को हम उसको यूज करते थे. फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि कैसे मतलब सोलर एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, और मैं एक फिजिक्स स्टूडेंट भी थी तो मेरे लिए समझना इजी हो जाता था. तो मैंने सोचा कि कैसे ये चार्ज हो रही है. फिर उसको खोल के तोड़ फोड़ करके उसमें से वो कनेक्शंस देख के सोलर पैनल निकाल के मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं इसमें काम करूंगी तो जरूर कुछ ना कुछ मैं कर सकती हूँ. फिर मैंने ये आइडिया जो मेरे दिमाग में आया मैंने अपने फादर के साथ शेयर किया. उन्होंने मुझे काफी एनकरेज किया क्योंकि उनको लगा कि ये आइडिया वर्थ है कि इसको हम आगे बढ़ाएं या इसको हम प्रैक्टिकली किसी चीज में, किसी मशीन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. Well, it's a wrap from my side. Stay tuned to CNN News 18 for more news and updates. Thanks for watching.